Sophia, Good good morning. morning. Good Good morning. morning. Good morning. Good morning, Betty ji. Good morning. Good morning, Deepa. Good Hi, morning, good Dipti. morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Good everyone. morning, ma'am. Hi, John. All the colorful things are not around you today. Good morning, I'm on my ma'am. phone, that's why. Okay. Yes. All right. Good morning, Dipti. Good morning. Good morning, Good everyone. morning, ma'am. I Good can morning. see Vijayji's northern lights right on the top and at number one. या ही आज पहली बार फर्स्ट आए हैं। हाँ, फर्स्ट है बिल्कुल। वो हमेशा फर्स्ट ही आते हैं, हमको दिखता नहीं है। Okay, yeah. So we are on to a beautiful chapter today, which is called the magical to-do list. So we have to, like in our journey or in our endeavor of realizing all our dreams, जो हमने chapter number 13 से शुरू की थी. So we are constantly going on till 22nd. We are realizing all the small little things जो हमारे रास्ते में अटकी हुई थी अभी जैसे hurdle race होती है ना, वैसे हमारी ड्रीम्स के रास्ते में देर आर सर्टेन वो हर्डल रेस की तरह देर आर एलिवेटेड एरियाज देर आर जैसे ताकेशीज कैसल नहीं होता है आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव सीन इट ऑन पोगो चैनल ऑन द टेलीविजन so उसमें यही होता है that you have to climb the stairs and then you have to jump and then there is a small water body फिर आपको वो पेड़ का वो एरियल रूट्स को पकड़ के उस साइड जाना होता है उसके बाद वहां पे फिर छोटी सी बोट रखी होती है वहां से जाना होता है till you reach your destination. So there are certain hurdles that comes on the way and you have to cross them to reach your destination अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए. So here our life, our journey from chapter number 13 to chapter number 22 is like that. जितने भी अभी तक थे ऐसे अभी तक बहुत सारे ऐसे hurdles हमारी जिंदगी में थे जिसके कारण खुल के health, like amazing health and awesome money and career and everything was not really coming in the fullest of the form because of those little impediments या hurdles that were there on the way like Takeshi's castle. एंड सो वो हम हटा रहे हैं ना धीरे धीरे. सो चैप्टर नंबर 13 हमने अपनी ड्रीम्स को विजुलाइज किया तो हमने वी हैव ऑलरेडी मैग्नेटाइज दैट इनटू आवर लाइफ. फिर चैप्टर नंबर 14 में हमने ये सीखा हाउ टू मेक आवर मैजिकल डे द डे मैजिकल दैट टुडे बी द मोस्ट ऑसम डे ऑफ माय लाइफ and I'm ready to go into the day and receive full like all the magics and miracles that the universe has to offer to me. सो हमने अपना डे मैजिकल कर दिया और यूनिवर्स को बोल दिया कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि मेरे आज पूरे दिन में खूब सारी खुशियों की बारिश हो एंड आई एम डिजर्विंग एंड आई एम वर्दी एंड वैल्यूएबल. ओके ये हमने सुबह सुबह ही अपने डे में बोल दिया और हमने चॉक आउट कर लिया था अपने पूरे डे का प्लान दैट आई एम सो ग्रेटफुल दैट माय डे वाज ब्यूटीफुल. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैड अ ब्यूटीफुल राइड और अ ट्रैवल. I'm so grateful that I had a great time lunching with my colleagues, with my friends. I'm so grateful that I enjoyed the best of health with strong strength, stamina. I'm so grateful that my gym workout was so meaningful today and I felt so good after it. I'm so grateful that, I received beautiful surprise today. इस तरह करके हमने सुबह ही कर दिया है ना, as if हम रात को कर रहे हैं. फिर उसके बाद हमने अपने रिलेशनशिप पे वर्क किया बिकॉज ये एक बहुत बड़ा ताकेशीज कैसल का सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट जो सबसे बड़ी रुकावट होती है वो है कोई ऐसा रिश्ता जो हमको बहुत दिल में दर्द दे रहा होता है. ठीक है. सो हमने चैप्टर नंबर 15 में उस रिश्ते में बहुत डाइल्यूशन लेके आए और हमने फॉरगिव करना सीखा उनको और कहा कि तुम जहां हो तुम बहुत खुश रहो. अगर तुम अभी भी मेरी जिंदगी में हो तो मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है. तो हमने वो किया. तो उसके बाद फिर हमने अपने हेल्थ के लिए किया क्योंकि ऑब्वियसली अगर ड्रीम कैसे आएगी अगर हेल्थ तो वेल्थ है डेफिनेटली. देन द रिचेस्ट पर्सन इज द वन हु इज सुपर हेल्दी. ऐसे ही सुना है ऐसे ही पढ़ा है और ऐसे ही महसूस भी किया अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से दैट जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है. तो हेल्थ इज डेफिनेटली वेल्थ. सबसे बड़ी वेल्थ हेल्थ होती है. फिर हमने अपनी हेल्थ पे वर्क किया और हमने 3-5-1 वाली प्रैक्टिस करी जिससे हमारे ब्लड पैरामीटर्स, हमारा हेल्थ, हमारा जो भी अगर हमारी इम्यूनिटी इश्यूज है वो पूरी तरह ठीक हो जाए. तो हमने एक और हर्डल को बहुत इवन आउट कर दिया है ना. उसको जैसे वो पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमको दे रहा था
we have made it okay now. So अब वो हमको bother नहीं कर रहा है, because by the law of attraction you have become a magnet to excellent health, क्योंकि हमने नंबर 9 वाली वो प्रैक्टिस की थी ना, 3 5 1 is equal to 9 हेल्थ के लिए। फिर हमने किया मैजिक चेक, हमारी ऐसी कोई चीज जो हमको चाहिए थी, जिसके लिए हमको पैसे चाहिए थे, वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है आपने घर शिफ्ट किया, उसकी आपको डाउन पेमेंट करनी पड़े, शायद 3 4 मंथ्स का कुछ रेंट देना होता है एडवांस में, या फिर आपको खरीदना है घर, तो आपको उसके लिए पैसे चाहिए, या आपका फोन बड़ा परेशान कर रहा है आपको, आपको लग रहा है मुझे नया फोन ले लेना चाहिए, सो वी नीडेड मनी फॉर दैट न्यू फोन। सो वो मनी हमने मैनिफेस्ट किया अपने मैजिक चेक कल वाले प्रैक्टिस में। और उसके बाद आज एक और चीज है हमारे मतलब उस रास्ते में, उस जर्नी में जो हमारी मंजिल तक है, द जर्नी दैट वी आर स्केलिंग यू नो टिल वी रीच आवर डेस्टिनेशन ऑफ हैविंग आवर ड्रीम्स रियलाइज, द डेस्टिनेशन इज व्हाट, those 10 dreams. So उस journey में the next thing that comes is today's practice, which is called the magical to-do list, because there are so many things you know that we need to have done, और वो हमारे दिमाग में कहीं subconscious में अटकी हुई है, that I have to do this, I have to go there, I have to call that person, I have to pick up my clothes from the tailor, it has been 1 month and I could not go, I have to get some new pair of shoes because I've decided that I'm going to work out and I'll take my workout to the next level. So I need good pair of shoes. Maybe my shoes currently are not the running shoes. Maybe they are walking shoes. Okay. So every shoe is different. You can't walk with the running shoes and you can't run with the walking shoes. ठीक है, तो सारे ट्रेकिंग शूज अलग होते हैं सबके, वो उसी तरह से स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सो आपको ये लग रहा था कि लेट मी गो एंड गेट रनिंग शूज और वॉकिंग शूज और वट एवर शूज यू वॉन्ट टू, ओके, सो इट कुड बी दैट। सो बहुत सारी चीजें, मे बी यू वांट टू चेंज योर लुक एंड यू वांट अ नाइस हेयर कट एंड अ गुड लुक, सो वो सारी चीजें आपके दिमाग में है। मे बी यू वांट टू गो एंड गिव योर कार फॉर मे बी गाड़ी के अंदर के सीट का ड्राई क्लीनिंग कराना है, could be that, could be that आपको आपको अपने घर में कुछ रेनोवेशन कराना है, could be that आपको व्हाइट वॉश कराना है, स्पेशली एक पर्टिकुलर रूम में, बिकॉज लाइक वहां से कुछ चिप ऑफ हो रहा है, कुछ हो रहा है। मे बी यू हैव टू गेट योर मिक्सी रिपेयर्ड, योर जूसर रिपेयर्ड और योर माइक्रोवेव रिपेयर्ड, or whatever it is. Maybe you want to buy something really useful, some appliance for the family, for the house. Maybe you want to book your flight tickets or your vacation. So these kind of things, ये हमारे रोड ब्लॉक्स बन के ना दिमाग में घुसी रहती है, हमको ये करना है, हम रियलाइज नहीं करते, बट जो भी पेंडिंग टास्क होते हैं, दे बिकम वेरी डोमिनेंट इन द सबकॉन्शियस माइंड, because of which we will not be able to realize and enjoy our life full on. So today's chapter is about that list, that make a list of all the pending things that you want to do, है ना। सपोज आपको कहीं पे पेमेंट करनी है, आपने नहीं की, आपको कोई आउटफिट ऑर्डर करनी है, मे बी आपको दिवाली के लिए कुछ नया कपड़ा खरीदना है, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है हेयर कलर कराना है, आपको लग रहा है दैट लेट मी गेट दैट ग्लैम लुक, okay, sometimes girls always love to look so glam, they anyhow, girls are all like dolls, like queens. I feel every girl is so pretty, so beautiful, and every guy is so handsome because it is a personality talking about them, है ना। So and girls have an edge that they can make themselves up. बेचारे बॉयज के पास तो इतने ऑप्शन ही नहीं होते, बेचारे बहुत ज्यादा ड्रेसअप करेंगे तो एक टक्सीडो पहन लेते हैं, उससे ज्यादा उनके पास ऑप्शन नहीं होता, नहीं वो लिपस्टिक विपस्टिक वो सब लगा के अपने आप को ब्यूटिफाई कर सकते। गर्ल्स के पास एक एज होता है। तो हो सकता है कि आपने सोचा हो लेट मी गो एंड गेट दैट ग्लैम लुक फॉर दिस दिवाली, and you want to change your look and become like, और मे बी आपने ये सोचा है दैट टू डू लिस्ट में कि मुझे जाके एक जिम की मेंबरशिप लेनी है, या मुझे रोज एटलीस्ट 1 किलोमीटर रन करना है, बाकी यू कैन वॉक बट 1 किलोमीटर रन करना है। मे बी आपने ये सोचा हो कि मुझे एक फिटनेस वॉच खरीदनी है ताकि मैं ट्रैक कर पाऊं दैट हाउ मच डिस्टेंस हैव आई स्केल्ड टुडे, हाउ मच स्टेप्स हैव आई टेकन टुडे, क्या मेरा पेस रहा है, मैं किस पेस पे आई एम वॉकिंग। So maybe it is that in your to-do list. So there are so many things because हम लोग इस जर्नी में है ना, तो हमारा constant evolution is happening all the time, isn't it? There's a great growth and evolution that is happening constantly.
हम अपस्केल करते जा रहे हैं, अपने खाने पीने को हमने कंट्रोल किया है, हम अपने वर्कआउट फिटनेस को कंट्रोल कर रहे हैं, हम बहुत सेल्फलेस होके लोगों को खुशी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, इन आवर ओन यूनिक एंड स्पेशल वे। हम अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीजें प्लान कर रहे हैं, हम मीनिंगफुल ट्रैवल्स डाल रहे हैं, हम ईज लेके आ रहे हैं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा ठंड, ease and joy all the time, with calm stable happy, जो मैं कल बता रही थी। जब आप अपने आप को लगातार बोलते रहोगे I'm happy, I'm calm, I'm stable, and I'm so content, I'm so like I'm so enough, I'm enough in myself, then you will feel that everything outside starts to get changed, and you will see evidences, opportunities, and all that we've learned in Dr. Joe Dispenza's book. Right. So today, let us just make that super long list of all the things that we need to do. और ये लिख के करने वाली प्रैक्टिस होगी, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम ही है मैजिकल टू डू लिस्ट। सो ये टू डू लिस्ट है, वो सारे काम जो आपको लग रहा है आपको करना है ना। ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होना चाहिए कि 1 साल के बाद 1 साल वाले काम, ठीक है। सो मुझसे कोई पूछ रहा था कि जो 6 महीने के बाद करना है वो, मैंने कहा नहीं, 6 महीने में अगर आपको कुछ करना है तो फिर आप उसको ड्रीम लिस्ट में डालिए, विश लिस्ट में आ जाएगा वो। जो हमारी विश लिस्ट है, डिजायर लिस्ट जो हमने 10 की बनाई हुई है, वो आप उसमें डाल दीजिए। अगर 6 महीने वाली, ये सारी वो वाली चीजें हैं, अभी वाली चीजें हैं कि मुझे फ्लाइट बुक करानी है, मुझे ये करना है, मुझे हम होटल बुक कराना है ना। जैसे मेरे अपकमिंग बहुत सारे ट्रैवल्स हैं अभी, हर दो, अभी मैं 1.5 महीने से आराम से घर पे चिल कर रही थी, बिकॉज आई लव वर्क लाइफ बैलेंस एंड आई लव बीइंग होम एंड स्पेंडिंग माई टाइम एट होम एंड स्लीपिंग एट 9। सो क्योंकि मेरे लाइफ में नॉन स्टॉप ट्रैवल आ रहा था, सो आई जस्ट टुक अ चिल पिल and then I thought for a month and a half I'm not traveling. Okay, so but now मेरे ट्रैवल्स खत्म नहीं होते, वो पोस्टपोन हो जाते हैं, तो वो सब, and they're all official reasons, so I have to do one after the other now. So मुझे हर जगह के होटल्स बुक करने हैं, है ना, तो वो मेरे टू डू लिस्ट में आ जाएगा। एंड बिलीव यू, मतलब वो मेरे दिमाग में है, चल रहा है, करना है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट we need to kind of really add magic to them so that they magically happen. So वो मैजिक कैसे ऐड होता है, वी ऑल नो इट इज थ्रू ग्रेटिट्यूड। सो हम ग्रेटिट्यूड इतना ऐड कर देंगे कि वो बहुत मिस्टीक तरीके से हमारी वो चीजें हो जाती हैं। और ये जब टू डू लिस्ट में हम इस तरह की चीज डालते हैं ना, यूनिवर्स गिव्स यू +1। I get room upgrade, so I book a normal hotel room, suppose अगर मैं हायत में बुक कर रही हूँ तो वो नॉर्मल रूम है ना, मुझे अपग्रेड मिल जाता है, मुझे VIP स्वीट मिल जाता है अपने आप, because this is how the energy plays up, because it is always that energy playing up in our life all the time. आपने deliberately अपने आप को elevate किया, अपनी एनर्जी को, आप उसमें देखोगे that you will see the evidence of it, that वो चीज जो आपने सोचा था that you're going to have, you will get like an amazing thing, which is so surreal and so amazing and so beautiful. That is the level of trust also that you need to have on the universe. It always wants to offer you much more than what you have asked. Okay, so we can ask only so much ना, मतलब हमारी तो बुद्धि उतनी चलती है ना जितना हमारा दिमाग जहां तक जाएगा, कितना जाएगा। ठीक है, आज बैठे बैठे शायद 10 करोड़ पे चला जाएगा, but universe says that, well, have much more than that, but keep your work at yourself by keeping your energy upscale. That is what is the essence of life, and this is how we need to live and dream big and enjoy every moment. As I mentioned yesterday, I don't know, आप लोगों ने वापस उस चीज पे हुक हो जाओ जो मैंने कल बोला था, celebrate every moment of your life. Get hooked to it, get hooked to it, get hooked to it, get into that I am sitting here right now, sitting on the sofa with my alti palti marke, with my folded legs, sitting in front of you. There's a laptop in front of me. This moment is to be celebrated when I'm connecting with all of you together. So many cameras on, everybody is awake, they are listening, and which is so beautiful. And I've met most of you in person also. So this moment is to be celebrated. The voice that is coming out is to be celebrated. Then when I just randomly wear my running shoes, that moment has to be celebrated. Wow, like I can use my hands and I can wear my shoes. Not too many people can do that. There are many people who cannot
who don't have both the hands to actually tie the shoelaces, and their nervous system working so well that you can maneuver your fingers and tie the shoelace and fold it. And so celebrate that wearing of that pink socks or white socks or black socks that you wear. So you get hooked to celebrating every moment of your life. Then there'll be no complaints, no, because you're celebrating it. By the law of attraction, you will see that your life will be full of those little moments and joys that make you celebrate yourself, your life, every smallest thing that you do, even if it is just picking up a cookie and putting it in your mouth. You're just eating that cookie, a coconut cookie maybe. So you're eating that, and that is like, wow, this is celebration. Food loves to be celebrated by absorbing all positive thoughts. So that is what life is like all about. So I hope that all of us learn how to do that, build up your muscle to do that, build up your muscle to celebrate that walk, that beautiful sunrise happening, seeing that bird flying. Yesterday throughout when I was running, there was a beautiful brown and black colored butterfly. It was just chasing me, like as if it was playing with me. I was reveling in so much of joy and celebration that time. Kabhi it is coming, jaise wo hota hai na luka chipi game. So it was coming from the sides in front of me. Then it said that, okay, I'm going behind now, look at me. And then I couldn't see it. I looked behind. Then again, it came in front of me. And then it started, like going ahead of me. Then it took a U-turn and came back towards me, around me. Then it was literally like there is some force for the universe communicating with me, some kind of a thing. So I was so much reveling into that moment, into that celebration, actually smiling. And I was telling universe that I know you're playing a game with me. I know why this is happening. I mean, like, why this butterfly suddenly and chasing me till a very long distance. So it is like that. So celebrate those moments, just that look when you're just sitting alone, or, you're writing, celebrate that moment, celebrate life. This is the whole crux. अगर हमने ये सीख लिया ना, तो हमने सारी किताबें पढ़ ली है ना. So अब हम पढ़ते हैं, और हमारी very beautiful बिट्टी जी आज हमारे लिए पढ़ रही हैं the magical to-do list. Good morning, बिट्टी जी. And Good thank you morning, for ma'am. everything that you do. Thank you, ma'am. Thank you. It's my pleasure, ma'am. अच्छा, अभी ये इमेज जो है इसमें ये देखो, ये आपकी मैजिकल टू डू लिस्ट है. This is connected by a string to the hydrogen balloons, because hydrogen is lighter than oxygen, lighter than the air. So वो जो balloon होते हैं ना, they always fly up. So they are flying up towards, and ये gratitude से भरी हुई list है. इसमें सब कुछ, there is so much of the energy of gratitude that the God doesn't have a choice to not have it answered. I mean, this list is going to get answered for sure. And it is gone up. So we have said thank you and we've surrendered. Surrender is a very strong feeling. You've surrendered, you've left it. पकड़ के रखोगे तो वो जाएगा नहीं ना. हाँ जी, हम पढ़ते हैं अभी. Day 18, the magical to-do list. The world is full of magical things waiting for our wits to grow sharper. Quote by Adam Philpotts, novelist and poet. Really, when you think about it, gratitude is your best friend. It is always there for you, always available to help you. It will never fail. It will never fail you or let you down. And the more heavily you lean on it, the more it will do for you and the more it will enrich your life. Today's magical practice will show you how to lean on gratitude even more so it can do far more magical things for you. Every day, there are little life problems that come up and that need solving. Sometimes we can feel overwhelmed if we don't know how to solve a situation. Maybe your problem is that you don't have enough time for all the things you need to do. And you are at a loss because there are only 24 hours in a day. It may be that you feel overwhelmed from work and you want more free time, but you can't see any way to have it. You may be at home taking care of children
and you are feeling frazzled or exhausted, but you don't have the means to get support to give you time out. You may be faced with a problem that needs fixing, but you have no idea which way to turn to fix it. You may have lost something and tried your best to locate it, but had no luck. Or you might want to find something like the perfect pet, perfect babysitter, perfect a great hairdresser, or amazing dentist or doctor. And despite your best efforts, you haven't been able to find what you need. You could be in an uncomfortable situation because something a person has asked you to do, but you don't know how to respond to them. Or you could be in some kind of dispute with someone, and instead of getting it resolved, things seem to be getting worse. This magical to do list practice will help you with any little day to day problems when you don't know what to do, or when you simply want something to be done for you. You will be amazed at the results. When you combine gratitude's magical power with the law of attraction, people, circumstances, and events must be rearranged to do what you want done for you. You will not know how it will happen and how it will be done for you. And that is not your job. Your job is simply to be as grateful as you can be for what you want done right now, as though it were done. And then let the magic happen. Today, create a written to do list of the most important things you would like to be done or resolved for you. And the title your list, the magical to do list. You might put things on your list that you don't have time to do or don't want to do, along with any current problems, from the smallest day to day things to bigger life situations. Think through any area of your life where you need something resolved or done for you. When you have finished making your list, choose three things from your list to focus on today. And one at a time, imagine that each item has been magically done for you. Imagine that all people, circumstances, and events have been moved to do it for you, and it is now done, all all done, all sorted, all solved for you, and you are giving massive thanks in return for it having been done. Spend at least 1 minute on each of your three items, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. You can follow the same practice on the rest of the items on your list at another time. But there is power in simply putting the things you want done on the magical to-do list. Remember that the law of attraction says like attract like. And that means that when you are grateful for the solutions as though you have them, you will attract everything you need into your life to resolve the situation. Focusing on problems attracts more problems. You have to be magnet to the solution, not a magnet to the problem. Being grateful that you have the solution and that it has been resolved attracts the solution. To demonstrate how powerful this magical practice is, I want to share a story with you about my daughter who used this practice to attract her lost wallet back to her.
After being out one night, my daughter discovered the next morning that she did not have her wallet and she had no idea where she might have lost it, and even if it had been stolen. She called the restaurant where she went to dinner, the taxi company she used to come home, the local police station, and she searched the street and knocked on the surrounding doors. But no one had found her wallet. Other than the fact that my daughter's wallet contained the usual precious things in it, including all her bank and credit cards, driver's license, and cash, her biggest concern was that her wallet contained no current contact information because she had been overseas for some time. She did not have a publicly listed phone number, and with a common surname, there seemed to be no hope. But despite the seemingly impossible obstacles, my daughter sat down, closed her eyes, and got a picture of her wallet in her mind. She visualized that she was holding her wallet in her hands. She opened her wallet, she went through all its contents, and she felt enormous gratitude that she had her wallet and everything in it back and in her hands. For the rest of the day, whenever she thought of it, again my daughter imagined she had her wallet in her hands and she felt enormous elation and gratitude about that her wallet had been returned to her. Later that night, she received a call from a farmer who lived 100 miles away, saying that he had found her wallet. The extraordinary part of this story is that the farmer had found the wallet in the street outside my daughter's home in the early hours of the morning, and he immediately searched the wallet looking for contact details. He made several calls in trying to find its owner, but to no avail. But so he gave up and drove back to his farm with the wallet. But while he was walking out in the fields at his farm, the valet kept nagging and nagging at him, and he decided to search through it one last time. He found a small piece of paper with a man's Christian name written on it, and so he put the Christian name together with my daughter's surname and called directory assistants. There was just one listing for that Christian name and surname. The farmer called the phone number and home. It was the home of my daughter's father. To this day, we do not know how the farmer got that phone number, but it was an unlisted number. We called directory assistants ourselves several times after this happened, and the response every time was sorry, there is no listing for that number. From 100 miles away, through the most extraordinary sequence of seemingly impossible events, my daughter's wallet was returned to her intact. She fulfilled her part in being grateful that she had her wallet back, and as must happen, gratitude performed its magic and moved every person, circumstance, and event to return her wallet to her. The magical power of gratitude is available for you to use as well, and it always has been. You just had to discover it for yourself and learn how to use it. Magic practice number 18, the magical to do list. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel
as grateful for that blessing as you can. Create a written list of most important things and problems you need done or solved. Title your list the magical to do list. Third, choose three of the most important things from your list and one at a time, imagine that each thing has been done for you. Fourth, spend at least 1 minute on each thing, believing it is done and feeling enormous gratitude in return. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Thank you, Vicky ji. ma'am. And you're also the Thank you. co-host now. So, I like Okay, along. ma'am. Okay, ma'am. All Okay, right. ma'am. Thank you so much for reading so beautifully. So this is Thank such a nice story that we've heard about Rhonda Byrne's daughter. So this is again something that we really need to. It says that there is magic all around us that this chapter starts with. And इसमें जो story है उसमें ये बताया कि how seemingly impossible situation became possible. तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, isn't it? बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सिचुएशन थी कि वॉलेट ही खो गया उनका, मतलब वो कहाँ गिर गया, कहाँ हुआ. सो शी जस्ट डिड द विजुअलाइजेशन टेक्निक. शी फेल्ट एज इफ उनका वॉलेट उनके हाथ में है and she closed her eyes. 1 second, I'll just 1 second. Please give me a Priya or anyone. Would you like to, Poonam? This story, can you explain? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, and thank you, Deepti, ma'am. So, in this chapter, in this day, on this day, Rhonda Byrne is talking about her daughter who lost her wallet while she was in US, and there was no, and because she was from Australia, there was no listing of her number. And though she found out everywhere, in the cab she came and in the hotel or the restaurant she went, she could not find it. But on her part, what she did was she did gratitude. She visualized that she has the wallet and all the contents in the wallet are there. She did it multiple times in a day. And you know how ma'am said that all the impossible things turn into possible by the magic of gratitude. So she got a call from a farmer, which again was very mystical, that he has his wallet, he has her wallet, and he found it on the road, I think near her house. So and that is how she got her wallet, because on her part, she did the gratitude. She surrendered it to the universe, that she will get the wallet. And the farmer, when he got the wallet, and he could not find any number or any name inside the wallet, he took it with him. And but the thought, because she was doing the gratitude, the thought that he has someone's wallet was nagging him. And somehow he mystically, I don't know how, this is a working of the universe, that he dialed Rhonda Byrne's number, which was not even listed. And he got and he got the number. After that, Rhonda Byrne and her daughter tried, finding their number on the directory, which they couldn't. So this is how the working of the universe is. When we surrender it to the universe, when we believe in the forces, this is how things orchestrate and come to us, which might seem so impossible, but is so possible because of the power of gratitude. So this is a very beautiful example in on this chapter, on this day, to say that so many times we have so many lists on our mind, we have so many things on our mind, when we don't know how to do it. Every day we might make a rough list or a list that we have to do it, but by the end of the day we again think that we could not have the time to do it. But when we sit down, and especially when we write the name magical to do list, when we write the whole list, and when we take out three, and when we prioritize three things which we really want to be done on that day, and then we visualize and surrender it to the universe as if it's done, like how it was on the picture, on the illustration, that we've surrendered it, and it's gone to the universe. And then
then things happen, mystical way, in a mystical way, in a magical way. And then we feel, which was so much pending in our life, they happen so beautifully, we don't even know. So this is how, and this chapter is also very important, because anything that is playing, that's a roadblock, that's playing heavy on our mind, will block good things happening in our life, coming to our life. Yes, ma'am, over to you, Yeah, please. thank you so much, Poonam. Thank you, thank you. Thank you, ma'am, for the opportunity. This is what this chapter is about. So जितने भी pending काम है, they can be small things, they can be a problem being resolved. हो सकता है आपको solution इसमें roundup ने लिखा हुआ है ना, that everyone has 24 hours, but there are so many things that we are not able to accomplish because of being too busy. And we'll say कि हाँ, I know मुझे वो काम करना है, but I'm super busy. I know that I have to go and buy a present for that person, but time ही नहीं मिल रहा है. Or have to go to that temple, for some prayer. Maybe it's been there in your mind that you had to go to that temple to offer or whatever it was. But again, kab jao, time nahi mil raha hai. So it could be that, in that magical to-do list, that the list that, and it is an unlimited list. It is not that you have to write only 3 things or 10 things or 12 things. It can be 15 of them. It can be 20 of them. Okay, so you have to just chalk out, sit and think. जब भी हमें thinking वाला काम होता है ना, तो हमारी written practice होती है. So that's why we have to make a written, and then Rhonda Byrne is categorically mentioned that उसको title करना है ऊपर magical to-do list. You don't have to just start making the list without putting the title. You have to put a title. It is a mandatory part of the practice today. That put the title magical to-do list, and then think of those things, छोटी छोटी चीजें जो दिमाग में है कि हाँ ये वाला भी काम था. Keep asking your subconscious mind. This is what I always tell you ना, because एकदम से इन सीरीज याद भी नहीं आता. मैं जब रात में मैजिक रॉक भी करती हूँ तो उसमें से मुझे 5 चीजें बहुत आराम से याद आ जाती है. That okay, I remember those 5 things, ये था, ये अच्छा हुआ, and I met my neighbor, मुझे बड़ा अच्छा लगा that उन्होंने ऐसा ऐसा बोला. I'm so grateful कि मेरा आज order डिलीवरी डेट के पहले आ गया, ये याद रहेगा. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैड सच अ वंडरफुल राइड टू वर्क. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आज मेरे सारे काम, सारे बॉक्सेस चेक हो गए थे, मतलब सारा काम कर लिया था ऑफिस वाला जो मैंने सुबह सोचा था. आई एम सो ग्रेटफुल दैट आज खाना कितना अच्छा लग रहा था, मुझे खाने में बहुत अच्छा लगा. आई एम सो ऐसे फिर याद ही नहीं आता है, जबकि there are so many amazing things that had happened. Then you have to ask your subconscious mind, what more do I need to write? What more? So ask your subconscious mind when you're making this to-do list, that और क्या चीजें हैं जो मुझे करनी है. हाँ, मुझे वहां का होटल बुक करना है. अच्छा, और क्या करना है? अच्छा, मुझे उसकी डेट फ्रीज करनी है, so that I can block my calendar. अच्छा, फिर मुझे दिसंबर में ये वाला काम करना था, बट उसको अभी करना पड़ेगा, so I need to again do that. फिर अच्छा, वो बुक प्रिंटिंग में डालनी है, वो मेरी मैजिकल टू डू लिस्ट में आ जाएगी कि बुक की फर्स्ट कॉपी आ गई है, एंड हैव टू एडिट एंड जस्ट गो थ्रू इट. सो वो एक काम हो गया. सो लाइक दिस देयर आर सो मेनी थिंग्स. मे बी यू नीड टू बाय अ गुड पेयर ऑफ शूज. Maybe you were looking forward to buying some nice heels for yourself or some nice shoes. At times there are shoes to be repaired, something really expensive shoe, and you think that उसको थोड़ा सा फिक्स करने की जरूरत है ना. इंडिया में तो फिक्स हो जाते हैं, ये लग्जरी है हमारे पास. यहाँ पे घड़ियां भी ठीक हो जाती है, यहाँ पे शूज भी फिक्स हो जाते हैं, अगर कपड़े भी ऑल्टर हो जाते हैं. ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज लग्जरीज आर नॉट देयर आउटसाइड इंडिया. सो अगर ये काम भी करना है, जस्ट पुट इट, थिंक अबाउट द थिंग्स एंड पुट इट, बिकॉज आपने उसको टाइटल तो लगा ही रखा है मैजिकल टू डू लिस्ट. कुछ प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करनी है. सपोज आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ था, and after that this has been there in your mind that you didn't like it so much. Obviously आपका किसी से आर्ग्यूमेंट होता है तो आपको खुद अच्छा नहीं लगता. So अगर वैसा कुछ हुआ था, just put it that look for to resolve that issue or whatever it was with so and so person, or to पिक अप द फोन. कभी भी अगर सामने से हमारी ईगो हमको अलाउ नहीं करती है किसी से आर्ग्यू किया तो उससे बात करने के लिए, बट इफ यू कैन जस्ट शट दैट ईगो डाउन एंड जस्ट से हाय, आई जस्ट थॉट दैट आई विल से हाय, एंड आई डोंट वांट टू कैरी एनी ग्रज, एंड दैट इज ऑल यू नीड टू से. ठीक है, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी. इवन इफ इट इज सम प्रैक्टिस जो आपको लग रहा है दैट आई नीड टू डू लाइक मे बी 12 प्रैक्टिसेस इन अ डे, और वो दिन अभी तक आया ही नहीं है जब आपको 12 प्रैक्टिस कर पाए हो एक दिन में. सो देन मेक दैट डे, लाइक डू द 12 प्रैक्टिसेस. वो भी टू डू लिस्ट में डाल दो.
that to find a day when I can do 12 practices in a single day. Okay, like this. You have to buy, you have to get something repaired, you have to call up someone, you want to pay a courtesy call to someone, pay a visit, visit a dentist, अपना हेयर कट कराना है, आपको कुछ भी कराना है, इसमें डाल दो आप मैजिकल टू डू लिस्ट में. And once you put it there and then pick up the top 3 things जो extreme priority की चीजें, you know, could be that number 1, number 2 and number 3, कौन सी वो priority वाली चीज है, उसको आप ढूंढो और उसको विजुअलाइज करना है मिनिमम 1 मिनट के लिए, as if it's already been done. And you will see by the law of attraction, you will magnetize it to you. So यहाँ पे Rhonda Byrne ने mention किया हुआ है that it's a very powerful practice, और ये magic is there all around us, but it is for our wits to grow sharper and find it, because we always are problem oriented. One thing that she has really mentioned about here, कोई भी issue होता है तो हम उसका solution नहीं ढूंढते, हम by default mode में we go towards the problem, we gravitate towards the side, अच्छा कैसे हो गया, क्या हो गया, है ना. जैसे yesterday I was seeing various posts about Mr. Ratan Tata. He's a legend, someone we really look up to, someone who's left a legacy and more. But then I just thought that, okay, what are my 3 takes from his life? You know, that because we know a lot about his life, we know how hard he's worked, we know that, you know, like what has been his endeavor into establishing so many organizations and airlines and companies and the Tata products that we use. घर में हमारी चाय भी अगर वो रेड लेबल ग्रीन लेबल आ रही है या कोई आ रही है तो वो भी टाटा प्रोडक्ट होता है, isn't it? So everything, I mean, Tata is all over. When you're flying also, you see Tata Airlines. I mostly fly Vistara for domestic travels, and you know, I always prefer Air India for international. So that with the both Tata products. So there are, everywhere we look, there is a Tata product, you know, so it's all coming from him only. So I just thought that, okay, what are the top 3 things that I can emulate in my life that I've learned from him? And that was it, you know, because he's left a legacy. What is it that I can do? Just sitting and crying, oh God, he's gone away. Everyone who comes has to go away. He's done so much that his life needs to be celebrated and he needs to be remembered very, very fondly, you know, like very fondly. Such a nice gem of a person, loved the dogs, very unconditional love and support, you know, so intellectual. I loved his very honest interviews, always very honest. He was so organic. So then I thought, और कल ही हमने ये वाला chapter किया था in Dr. Joe Dispenza's book, that be authentic and be transparent, and it is okay अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, you know, like everyone has their great days and bad days and good days, and everybody's working for it and working to get a better day or to transform the energy. So all that, but kali humne padha tha. So this is something that I've learned, that be very authentic and very transparent. If you want to express something, go ahead and express in a very wise way. The second was that have that kind of an intellect that, you know, you can enjoy life while at the same time you be the best at your work, because he was always the best at whatever he did. He was never a secondary, he was never at number 2. He always did his best, so you can learn that from him. Okay, and third is to kind of very calm and a stable head. You know, I have never seen, like, you know, there have been people asking him very nasty questions, because when you're a celebrity, you are faced with all sorts of brand and flag coming in from people. But he was so poised, he was graceful, very intellectual and very calm and stable while answering them. So वो बहुत अच्छे से सबका जवाब देते थे, बिना लूज किए हुए अपना टेम्पर या जो भी है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन था, और अगर नहीं देना होता था तो भी वो प्यार से बहुत विट के साथ समझा देते थे. जैसे शाहरुख खान को भी मैं देखती हूँ, कोई उनसे बहुत नास्टी सवाल पूछता है तो वो बहुत ही हंसी में उसको जवाब देते हैं, है ना. ये इन लेजेंड्स का यूएसपी होता है, that they don't let किसी और की energy affect your energy, isn't it? So you can learn, you know, make a list, get to know more about Mr. Ratan Tata and see that these are the 3 highlights I will try to emulate in my life, है ना, जिनके कारण अगर वो बड़े बने हैं क्या उनके लाइफ के. So इस तरह से always be solution oriented. Don't dwell into the problem. Oh God, he's passed away and this. Everybody, he's lived his life to the fullest, and sitting and crying about it and just, you know, like being on social media and talking, oh, we will miss. Why?
I mean, you can't, he इतना करने के बाद इतनी लंबी चौड़ी टीम उन्होंने निकाल दी है, बना रखी है of people, you know, like he's created diamonds in all his companies. He was not even really proactive in his company for a few times जब से उनका हेल्थ इश्यूज चल रहे थे. मतलब कल मैंने देखा तो वो केक काट रहे थे, वो डिसाइफर भी नहीं कर पा रहे थे कि वो केक काट रहे, मतलब उनको पता नहीं लग रहा था. तो उनका वो लेवल ऑफ हेल्थ हो गया था एंड में. तो ऐसे में उनकी सफरिंग एलिविएट हुई ना. मतलब सोचो अगर वो इस कंडीशन में रहते, इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल, इन एंड आउट ऑफ द हॉस्पिटल, इन एंड, इट इज नॉट अ गुड लाइफ टू लीड. He deserves living with the best of health and energy and all of that. और जब इसीलिए God took, you know, his soul looked for another life, because it's no point dragging. So celebrate him as a person in life. So in life situations also we have to be very, very you know, like super solution oriented. Yeah, I would say जैसे इन्होंने बताया है, तो जैसे कोई इश्यू हुआ immediately, what can I do about it? What can I do about it? You know, should I, suppose आपके argument हुआ है, so you sit and talk and finish it off. है ना? In a very good sense, sit, talk and be very calm and stable and finish it off. There is no point increasing your temper or your temperature because of something that has happened. There is always a way out. Always, for everything. नहीं हो पा रहा है इसका मतलब है अभी प्रॉब्लम ओरिएंटेड ही है. तो सोल्यूशन ओरिएंटेड, अच्छा ये वर्कआउट नहीं हो रहा, देयर इज ऑलवेज द नेक्स्ट ऑप्शन. ओके, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट, व्हाट टू डू नेक्स्ट. दैट हैज टू बी द एटीट्यूड इन लाइफ. है ना? बैठ के प्रॉब्लम में ड्वेल करने, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया, क्या रीजन था, हाउ डज इट मैटर. है ना? कैसे हो गया, क्या हो गया, की फर्क पैंदा. आप आगे आगे आप देखो कि क्या करना है उसके बारे में, कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे ब्यूटिफाई करना है, कैसे यू नो उसको वर्कआउट करना है उस पर्टिकुलर इशू को. इजंट इट? Like this is how it works. So immediately get into that action mode, and you will see that life opening up before you in the most beautiful, magical, mystical way. है ना? And being in that energy of gratitude. तो आज का ये चैप्टर है, and Poonam has already explained to you about Rhonda Burns. कितना impossible सा experience है वो. मतलब वो अमेरिका में रहते, वो ऑस्ट्रेलियन उनका वो है ओरिजिन, जिंदगी भर वो वहां रही हैं. उसके बाद शादी उनकी अमेरिका में हुई, डॉटर की, रोंडा बर्न की डॉटर की. तो शादी अमेरिका में हुई. अब उनकी, रोंडा बर्न की बेटी दामाद दोनों वहीं रहते थे अमेरिका में. और ऐसे में ना उनके पास कोई, मतलब पासपोर्ट होल्डर भी ऑस्ट्रेलियन, सब कुछ ऑस्ट्रेलिया का. एंड ऐसे में उनका वॉलेट खो गया जिसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, एड्रेस सारे पीछे के थे, कुछ भी नहीं था उसमें ऐसी चीज जिससे पता लगे इंसान को कि ये किसका वॉलेट है. और ऐसे में उन्होंने बस अपनी विजुअलाइजेशन टेक्निक करी. उन्होंने हाथ में वॉलेट को फील किया, आंख बंद करके, और उन्होंने मैसिव थैंक्स, इनॉर्मस थैंक्स दिया कि उनको वॉलेट इंटैक्ट मिल गया, बिना सोचे हाउ इट इज गोइंग टू कम टू मी. है ना? सो शी वॉज नॉट बीइंग प्रॉब्लम ओरिएंटेड, शी वॉज बीइंग सोल्यूशन ओरिएंटेड. जब वॉलेट खोया भी तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया कि किसी ने वहां पे दिया. ये भी तो सोल्यूशन ओरिएंटेड ही होता है कि आपने पुलिस को फोन किया कि आपके पास कोई वॉलेट आया है ऐसा ऐसा इस कलर का. उन्होंने कहा नहीं. फिर उन्होंने उस होटल में, जिस रेस्टोरेंट में उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ डाइन किया था, वहां पे उन्होंने फोन किया कि वहां पे कोई वॉलेट तो नहीं छूट गया है. उन्होंने कहा नहीं. फिर उन्होंने अपने घर में आसपास जो नेबर थे और अपने घर के बाहर जहाँ पे टैक्सी ने उनको उतारा था, उनसे उन्होंने पूछा कि किसी को दिखा. उन्होंने कहा नहीं. फिर उन्होंने उस टैक्सी स्टैंड में जहां से उन्होंने टैक्सी ली थी वहां पे फोन किया देखने के लिए कि टैक्सी में तो नहीं रह गया था वॉलेट. दे सेड नो. Then she said that, okay, done now. Then she started using the visualization and gratitude technique. So visualization and gratitude को साथ उन्होंने merge करके उन्होंने बहुत सारा थैंक यू किया कि वॉलेट उनके हाथ में है. उन्होंने वॉलेट को खोला, उसमें जो सारी चीजें थी, all in the mind's eye. That is all she did in the mind's eye. That she opened the wallet और उन्होंने देखा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और सब कुछ था उसमें. है ना? And then she gave enormous thanks in return. So this is how we need to be. So she was being super solution oriented. She actually could have said, oh, मुझे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा है, वैसा है, and all those things. Sounds cow. Yeah. So this is you know, like how the attitude has to be, that attitude of solution oriented and that attitude of gratitude. ये दोनों चीजें अगर साथ में होंगी, we can have anything on this planet work for us in our favor, in the best possible way, for the most magnificent outcome that we can ever imagine. Okay, so हम
अपना एक्चुअली ये सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ये वे ऑफ लिविंग होता है हमारा जो हम इस बुक में पढ़ रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई वी कीप रिपीटिंग इट बिकॉज दिस इज अ वे ऑफ लाइफ. It's a way of life. Being solution oriented, it is not easy. Okay, but it is a way of life. जैसे फ्लाइट कैंसिल हो गई है सपोज, व्हाट इज द सोल्यूशन? इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड ब्लेमिंग, ये एयरलाइंस का ऐसा ही है, ये एयरलाइंस कभी टाइम पे ही नहीं जाती है, इस तरह से ही होता है, पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं, हमेशा फ्लाइट को डिले करते, कैंसिल, इनकी फ्लाइट कभी टाइम पे ही नहीं जाती है. Who's giving that energy? You're giving that energy. आपकी आगे की 10 फ्लाइट अब लेट होंगी because your subconscious mind emotionalizes whatever you have said about the airlines. Okay, so it is not picking up that particular airlines, it is picking up that airlines delay. वो images capture करता है subconscious mind. तो images में airlines 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 हो रहा है, delay delay delay, cancel cancel cancel. Keywords sentence के जो होते हैं, thought के होते हैं, they get translated into the images and they get absorbed in the subconscious mind. So now airlines, cancel, delay. आपके सबकॉन्शियस ने पकड़ लिया उसको. बस अब आप बैठे रहो, अब आपके आगे की 10 एयरलाइन सब डिले कैंसिल यही होंगी because of the energy we have put it. Instead, we could have looked for another option. Airlines are always, they always say that okay, you can either apply for a refund or book a next flight. ठीक है, तो रिफंड तो हो ही जाएगा. अब नेक्स्ट फ्लाइट अपनी बुक कर लो दूसरी वाली एयरलाइन से. हर 15 मिनट पे हर जगह पे एयरलाइंस जाती हैं, है ना. अगर डोमेस्टिक ट्रैवल आप कर रहे हो तो हर जगह पे एयरलाइंस जाती हैं, और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो तो देयर इज ऑलवेज अ वे आउट. इंटरनेशनल ट्रैवल्स इट्स ऑलवेज बेटर ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू करो, यू जस्ट हैव टू कॉल देम अप. फिर वो डिले होंगी, कैंसिल होंगी, दैट्स नॉट ए बॉदरेशन. वो लोग इतने अच्छे से मैनेज करते हैं ना, you know, you don't even need to tell them. They will maneuver, they will do it, they'll, you know, like kuch na kuch karke idhar udhar, even if it's a connecting flight, they'll make a way out of it. So there's a solution to every problem. This is what I'm trying to say. There's a solution to every problem. No point sitting and crying over the spilt milk. We've heard this sentence for the longest time as a quote of life, that no point crying over a spilt milk. दूध तो गिर गया है ना, अब क्या, या तो दूसरा दूध लेके आओ, या पाउडर वाले दूध से मैनेज करो, या स्किप कर दो, बाहर जाके कॉफी पियो, है ना. ये सब हो सकता है. So this is how we need to, हमारा attitude has to be very, we have to be stable and calm. This is what I mentioned yesterday and I'm mentioning today. So when when you are in that celebratory mode of life, you are celebrating everything. It's okay, things can go wrong, but then हमारा टेस्ट तो होगा ना. मतलब टेस्ट तो होगा ना. सिर्फ ग्रैटिट्यूड लिखने से क्या होता है, ग्रैटिट्यूड जीना भी तो पड़ता है. You have to live gratitude. You don't have to just write it or speak it or say thank you or whatever. All the practices that we do, they eventually come into our behavior, into play. And that is the whole essence of the whole being that we need to cultivate within us. And that's how it is like. So magical to-do list, टाइटल लगा देना, मैजिकल टू डू लिस्ट कैपिटल में लिख के, उसके आगे एक स्माइली भी लगा देना, बहुत प्यारा सा. ठीक है. और फिर अपनी लिस्ट बना लेना, पूरी लिस्ट, टू गो फॉर अ हेयर कट, टू गेट माय हेयर कलर्ड, टू गेट माय ड्राई क्लीन फॉर माय सोफाज डन, whatever it is, to do some Diwali ki safai or whatever it is that you had thought, to clean the cupboards, to arrange the clothes, to take out the winter clothes, arrange the summer clothes, or just arrange the cupboard. हम सबके cupboard में बहुत mess हो जाता है कभी कभी, है ना. और maybe you want to declutter things, please declutter. बहुत stuck एनर्जी, कोई भी चीज अगर आपने 1 साल से यूज नहीं की है तो उसको घर में मत रखो, बिकॉज ग्रीडी होने का कोई फायदा नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी बहुत महंगी वाली साड़ियाँ की जरूरत है, ठीक है, तो आप प्लीज जाके उनको दे दो. काम में तो आनी नहीं है. हर ओकेजन के लिए तो हम कपड़े खरीदते हैं, isn't it? वेकेशन होता है उसके लिए कपड़े खरीदते हैं, कोई घर की शादी होती है, बहुत क्लोज वेडिंग, उसके लिए कपड़े खरीदते हैं. सो उनका क्या होगा, जो 25 साल पहले खरीदी थी हमने साड़ियाँ, अब या तो अपने घर वालों को, मतलब रिलेटिव्स को दे दो जो लोग बहुत ज्यादा साड़ीज पहनते हैं. declutter करो प्लीज, मेरे कहने पे just put this, declutter your shoes please, declutter your t-shirts for all the girls and guys out there. अगर वो t-shirt आपने 1 साल से नहीं पहनी है, it is no point, it's not giving babies in the cupboard for sure, right? So just have it removed immediately. There are so many people, हमारे घर में जो trash bin collectors होते हैं, आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हो, वहां पे इतने सारे लोग होते हैं जिनको कपड़ों की जरूरत होती है, वो एक ही कपड़ा होता है, और यहाँ पे हमारे पास 50 पड़े हुए हैं जिसमें से 30 we don't wear, we wear 20 में भी.
Okay, so please declutter. Please put decluttering your shoes, decluttering your bags, and decluttering your clothes as a prime responsibility and a duty today. And you will see वो stuck energy घर से जब निकलती है तो आपके घर में movement होना शुरू हो जाता है, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं, है ना? क्योंकि कहते हैं कि stuck energy, मैंने आपको बताया था दैट सुनीता सुनीता जो नेबर है, तो उसके उसके कोई क्लाइंट आए थे उसके ऑफिस में, तो उन्होंने उसको कहा था, ऐसे ही कुछ देख रहे थे तो वो कह रही थी कि नहीं आई डोंट नो मेरे घर में कुछ इश्यूज व्हाटएवर इश्यूज वर देयर, सो शी सेड ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, देयर वर आर्गुमेंट्स और सम डिसहार्मनी समथिंग समथिंग, ओके, सो देन शी वाज जस्ट सेइंग दैट यू नो हाउ डू आई, इज इट रिलेटेड टू वास्तु और एनर्जी और व्हाटएवर, ही सेड नो, यू हैव अ स्पीकर इन योर हाउस दैट इज नॉट वर्क फॉर मोर देन 2 years. स्पीकर इज वो छोटे छोटे स्पीकर जो होते हैं ना म्यूजिक के, जो हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, तो आपके घर में कोई स्पीकर है वो 2 साल से नहीं चल रहा है, आप या तो उसको हटाओ या फिर उसको फंक्शनल करो, उसकी स्टक एनर्जी आपके घर में प्ले हो रही है। सो सोचो, मतलब जो इंसान आपके घर में आया भी नहीं है, वो इंसान उनके घर में थोड़ी आए थे, वो ऑफिस में आए थे, ऑफिस दूर है उसके घर से, ठीक है, वो ऑफिस में आए थे, क्लाइंट थे, और उन्होंने रूम भी बताया कि उस वाले रूम में एक स्पीकर रखा हुआ है जो आप बहुत टाइम से प्ले नहीं किया, आप प्लीज उसको हटा दीजिए या फिर उसको फंक्शनल कर लीजिए। तो मतलब सोचो हमारे घर में कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, है ना, जो हमने यूज ही नहीं की है, तो उस वो स्टक वो एनर्जी, बिकॉज एवरीथिंग इज एनर्जी, योर टी शर्ट इज एन एनर्जी, okay, your laundry and your undergarments is an energy, if you've not used it, remove it, it is that, so it is, everything is energy at the end of the day, है ना? इसीलिए कहते हैं घर में फर्नीचर को भी थोड़ा आगे पीछे करते रहो, सुना है ना आपने ये वाली बात, घर में फर्नीचर को आगे पीछे करते रहो, हिलाते रहो, क्योंकि वो एनर्जी मोबाइल हो जाती है, और मोबाइल एनर्जी चाहिए होती है, वी वांट एवरीथिंग टू बी सर्कुलेटिंग, वी वांट हैप्पीनेस, मोर हैप्पीनेस टू कम, वी वांट मनी टू बी सर्कुलेटिंग इन अ हाउस, इजंट इट? वी डोंट वांट इट टू बी स्टक कि फंस गए, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, सारे पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, देयर इज नो रीजन। कई कई बार बोलते हैं लोग कि दिवाली पे पेमेंट्स नहीं आती, दिवाली के बाद सब देंगे, किसने बनाया है ये बिलीफ? ठीक है, जिनके पास पैसे आ रहे हैं उनके पास तो रोज आते हैं, मेरे पास तो रोज आ रहे हैं, ठीक है, मेरे लिए तो कोई दिवाली दशहरा अब कोई सा भी दिन हो, मैं सोती हूँ तब भी टप 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 टपक रहे होते हैं मेरे अकाउंट पे पैसे। सो अपनी एनर्जी को बहुत हाई रखना है, मोबाइल रखना है, डीक्लटर करो, मैंने अभी ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं आप सोच भी नहीं सकते। एन आउटफिट, मैंने अरमानी एक्सचेंज की टी शर्ट खरीदी थी, ठीक है, वो कौन से कंट्री, किसी कंट्री से खरीदी थी, मुझे याद भी नहीं है, ब्लू कलर की बड़ी अच्छी सी, डिडंट वेयर इट इवन वंस, क्योंकि वो लॉन्ग थी, लाइक इट वाज कवरिंग यू नो बहुत नीचे तक, सो मतलब लॉन्ग लग रही थी, बिकॉज आई डोंट वेयर वेरी लॉन्ग टी शर्ट्स, सो लॉन्ग थी उस वक्त, मैंने खरीद लिया बिना ट्राई किए, बिकॉज कोई डील मिल गई होगी किसी कंट्री से, एंड इट वाज लाइक यू नो, मतलब इंडिया आईएनआर के हिसाब से देखो तो वो एक्सपेंसिव टी शर्ट थी, इट कॉस्टेड मी समवेयर अराउंड 17,000, एंड आई विदाउट वेयरिंग इवन वंस, मैंने पहनी, ट्रायल के लिए भी नहीं पहनी थी, आई जस्ट गिव इट अवे, क्या करती बिकॉज आई नॉट वॉन्ट इट फॉर मोर देन अ ईयर, सो आई जस्ट गिव इट अवे, बिल्कुल मैंने कहा नो ग्रीड, और जब तक ये जाएगा नहीं तब तक आएगा नहीं, है ना? सो इसलिए प्लीज डीक्लटर करो ऐसी चीजें। मैंने अभी अपने बैग्स निकाले हैं, आई मीन द मोस्ट प्रीमियम बैग्स यू कैन थिंक ऑफ, द मोस्ट प्रीमियम साड़ीज दैट यू कैन थिंक ऑफ, बिकॉज आई डोंट वेयर साड़ीज, फॉर एवरी ओकेजन आई बाय समथिंग न्यू, एंड कुछ कुछ साड़ीज हैं जो ट्रेंडी है वो है, और वैसे भी आजकल वो सब कौन पहनता है, मतलब आप बनारसी साड़ी पहन के आप शादी में भी नहीं जाते हो आजकल, isn't it? I mean, we want something like a pure chiffon with more this upbeat kind of a more trendy. It is like that. So अगर आपने नहीं पहनी है ना साड़ीज को, चलो 2 साल का एक की बजाय 2 का डिस्काउंट दे देंगे, रिमूव इट फॉर ऑल द गाइज आउट देयर, इफ देयर आर कोट्स एंड ऑल द trousseau whatever you not want, please give it to people. ओके अगर आपका वेट पुट ऑन हो गया है बहुत ज्यादा, आपको नहीं वो फिट हो रहा है, उसको दे दो, क्योंकि पहले की पैंट्स का थोड़ा स्टाइल भी अलग होता था, अब अलग होता है, तो ऑल द गाइज आउट देयर यू ऑल आर सो ट्रेंडी, सो अगर कोई भी ओल्ड फैशन चीज है प्लीज हटा दो उसको इमीडिएटली, डोंट हैव जीरो ग्रीड इन योर लाइफ, देयर आर मेनी पीपल आउट देयर हु आर वेटिंग टू गेट क्लोथ्स, हु डोंट हैव क्लोथ्स टू वेयर, और हमारे पास कपड़े रखने की जगह नहीं है, ठीक है, मेरे तो वो बेड के चेस्ट ड्रॉर में भी रखा हुआ है, यू नो बच्चों के रूम के भी उसमें मेरे ही कपड़े रखे हुए हैं, सबके सबके दीपक के कबर्ड में भी मेरे ही कपड़े रखे हुए हैं, मेरे कबर्ड में मेरे ही कपड़े रखे हुए हैं, जो इधर उधर क्लोजेट्स उसमें भी मेरे ही कपड़े रखे हुए हैं, सो दिस इज व्हेन आई रिमूव 60% ऑफ देम,
Imagine. So we really, and I'm sure this is the story of all of you also. I know that this is the story of all of us, all the girls and all the guys out there. This is the story. Please, please declutter. Make your shoes 50%. You know, like shoes अगर आप रखे रहे हैं और आप नहीं पहन रहे हो तो obviously आप उसको एक साल नहीं पहने तो आप आगे भी नहीं पहनोगे. ठीक है, बस वो लालच होता है और लालच बहुत बिलो द लाइन फीलिंग होती है. आप प्लीज उसके उस चार्ट में जाके देखो, फीलिंग चार्ट में greed comes very at the bottom. Okay, so let's do that. Declutter is one of the magical to-do lists that we all need to do. वैसे भी दिवाली पे लक्ष्मी जी आने वाली है हमारे घर पे. उनको cluttered घर में तो नहीं बुलाएंगे ना हम. उनको हम सारे मोबाइल चीजों के साथ बुलाएंगे जिनमें खूब अच्छी एनर्जी है जो आप यूज कर रहे हो. दैट वे. ठीक है, तो आज की मैजिकल टू डू लिस्ट की प्रैक्टिस यही है. मॉर्निंग में काउंट माई ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स हम लिखते हैं जेनरिक, सोच सोच के कि और क्या नियामतें हैं मेरी जिंदगी में, कि हाँ ट्रीज है मेरे घर के आसपास जिसमें से मुझे बहुत ताजी ऑक्सीजन मिलती है. इस तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें सोचो और उनमें से 10 लिखनी है. और रात को सोने के पहले मैजिक रॉक, और पूरे दिन भर में यू हैव टू, मतलब आज ये वाली जो प्रैक्टिस है ये आप डे में किसी भी टाइम कर सकते हो. इट इज नॉट दैट यू हैव टू डू इट टुडे इन द मॉर्निंग ओनली. किसी भी टाइम व्हेन यू इजी एंड काम एंड स्टेबल, डू इट देन. और लंबी सी लिस्ट बनाओ. नंबर 1 टाइटल डालो मैजिकल टू डू लिस्ट 1 2 3 4 5 6 10 20 25. ठीक है, उसमें से 3 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाली चीजें जो आपको इमिडिएटली चाहिए उनको आप विजुलाइज करो. ठीक है, विजुलाइज करो मिनिमम 1 मिनट के लिए कि वो हो गई हैं, आ गई हैं, एंड गिव इनॉर्मस थैंक्स इन रिटर्न. ठीक है, दैट इज व्हाट these are the practices. Now we go to the other book, which is Breaking the Habit of Being Yourself. And Aarti Khattar is reading for us. So we are continuing with yesterday's paragraph जो हमने पढ़ा था. Be transparent, be real, be who you are, and be authentic. That way we will embrace ourselves, and that is one point of self love also. हाँ जी आरती जी, आप पढ़ना शुरू करो. We'll just finish this topic. Good morning, ma'am. Thank Good you. morning. Equally, as the invisible giver of life begins to move through you, you will feel more like yourself than you have in a long time. Those traumas that produced emotional scars knocked your true personality from its center. You became more complicated, more polarized, more divided, more inconsistent, and more predictable. When you unmemorize those survival emotions that naturally lower the frequency of the mind and the body, you are lifted to a higher electromagnetic expression. And a greater frequency is now higher electromagnetic expression, and a greater frequency is now turning you on. And you free yourself by unlocking the doors to make room for a greater power to become you. Finally, it is you and you are it. You are one and you feel a coherent energy called love. It is the within that then manifests an unconditional state. Once you connect to and drink from the well of consciousness, you might experience a real paradox. It is quite possible that there will come such a sense of personal wholeness that you will find it difficult to want anything. This dichotomy was a veritable realization for me. Wants and desires come from lacking something, someone, and some place or some time. In being truly connected to this unconsciousness, I have had moments that it was hard to think about anything else because I felt so great. I felt so complete that any thought that would take me away from it would not be worth my moving from this place. So the idea is that once you arrive at this space to create from, you no longer need anything because the lack and emptiness from which you desired those things has been eliminated, replaced by a feeling of wholeness. As a result, you just want to linger in the feeling of balance, love, and coherence. This, I feel, is the beginning of true unconditional love. Feeling a sense of love and awe for life without needing anything
from outside of us is freedom. It is no longer being attached to external elements. It is a feeling that is so coherent that to judge another or to emotionally react to life and change from this state is compromising self. This is when the greater consciousness that we are all connected to begins to move out of us and we begin to express this through us. We move from human towards divine. We become more like it. We become more loving, more mindful, more powerful, more generous, more intentional, more kind, and healthier. That's its mind. Something else amazing begins to occur as well when you feel elevated and joyful. You will feel so wonderful that you will want to share the feeling of what you are experiencing with someone. And how do you share such great feelings? You give, you think, I feel so superb and uplifted that I want you to feel the way I feel. So here is a gift, and you will begin to give so that others can feel the gift that you are expressing from within. You are selfless and imagine a world like that. However, you can fashion a new reality from this internal order of wholeness, you must know that you will be creating from a state of being in consciousness that is no longer separate from whatever it is you desire. You are in absolute oneness with your creation. And if you can slip into it naturally, forget about everything that is tied to the old you will feel such a sense of exuberance that you will be begin to know that the creation you are focusing upon is yours. It will feel like hitting a tennis ball in the spot or parallel parking without mirrors within inches or within inches of the curb. It just feels right. You somehow know. I think this This is is only, we'll be able to read only so much today, Aarti ji. Thank you so much for thank your beautiful you. reading. Thank you, Thank you so ma'am. Thank you. much. Thank you. So this is what Dr. Joe Dispenza says. मुझे इतना अच्छा लग रहा है जो वो बोल रहे हैं कि जैसे मतलब हम लोग पूरे इतना ज्यादा, it's so much talk of the town, self love, you can do this, you do that, you can do that. It's nothing. It is just the way you're living your life, because the moment you become, you get into those thoughtlessness states multiple times during the day, as and when you get time, like your आपके neurons इतने अलग तरह से fire होते हैं that your soul starts connecting to the super soul, is what we say, that हमारी आत्मा और हमारी परमात्मा, they meet. So the consciousness and super consciousness are one at that point of time, whenever we are thoughtless, because thoughtless होना जरूरी होता है for your consciousness to merge with the super consciousness. And you get that sense of power that only can be felt and it cannot be explained, believe me. इसमें यही बोलेंगे कि आप लोगों को बताना चाहोगे कि आपकी लाइफ कितनी डिफरेंट लग रही है, यू आर सो एक्साइटेड, यू आर सो फुल ऑफ जॉय एंड लव ऑल द टाइम, और आपको बारिश आती है तब भी आपको अच्छा लगता है, तेज धूप होती है तब भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, हवा चल रही है तब भी अच्छा लग रहा है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है तब भी आपको अच्छा लग रहा है ना? आप क्राउड में हो, वन ऑफ द पर्सन इन द क्राउड, आपको तब भी अच्छा लग रहा है, वाओ देयर सो मेनी पीपल यार, व्हाट एन एनर्जी। और उसके बाद आप जब अकेले हो तब भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है वाह, आई लव माय कंपनी सो मच। when you're looking at nature, you're like, oh my god, wow, this is such a beautiful tree. Then you're looking at a small plant like a rose plant, you say that wow, this is like beautiful, what a color of rose, तो इसमें दो कलर्स हैं, इसमें अलग अलग शेड्स आ रहे हैं। देन यू सी अ सनफ्लावर, यू से दैट वाह, ये तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है कि वो धूप की तरफ देख के, धूप के सन के साथ फ्लर्ट कर रहा है ना? तो इस तरह आप अपने ब्लिस में रहते हो पूरे टाइम, सो यू बिकम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन दैट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड सो एक्साइटेड अबाउट, यू सो इन द मोमेंट एंड यू सो ब्लिसफुल। So ये वाली feeling आती है, and then you want to share with people that there's something happening to me and I want to share with people. So वो share कैसे करोगे? By being very selfless. You will just
revel in joy and laughter and love all the time. So your connections are like that, your moments are like that, your emotions are always on the high. You're so much you don't need to pretend, like so this is who you become, and this is such a natural process. It's a process. It's not the end goal. It is a process. It will keep happening. There will be dips little bit here and there, but then they will not bother you because you will immediately switch over to being very, very calm and so mentally stable and poised. And this is called the real grace of life. We call people graceful, but maybe there is so much of turbulence inside them. From the top, they look graceful, like hard crust, but अंदर वो गुई सा chocolate है, बाहर से crisp है. वैसे नहीं होंगे हम अंदर भी वैसे ही होंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट, और बाहर भी सॉफ्ट सॉफ्ट होंगे. And we'll be savoring and enjoying and celebrating every moment of life. It is so much in sync. जिस तरह से मुझे तो नहीं पता था हम क्या पढ़ रहे हैं, because I like to be organic. जब हम पढ़े, और मैंने ये किताब पूरी नहीं पढ़ी हुई थी, ब्रेकिंग द हैबिट. बीइंग सुपरनैचुरल मैंने पढ़ी हुई है पूरी, बट ये वाली मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी. तो उस हिसाब से ना, एक्चुअली व्हेन आई एम आल्सो डिस्कवरिंग द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ दिस. एंड देन आज सुबह जब मैंने बात यही की थी, दैट एवरी मोमेंट को सेलिब्रेशन बना रहे हो अपनी लाइफ का. खाना खा रहे हो तो सेलिब्रेशन है. रोटी थोड़ी हार्ड हार्ड लग रही है, उसको भी सेलिब्रेट करो, है ना. डोंट से दैट कितनी हार्ड रोटी है, मुझे खाई जा रही, मुझसे च्यू नहीं हो रही है, मुझे ये नहीं हो रहा है, ये डिले हो गया, वो डिले हो गया, जोमेटो ऑर्डर डिले हो गया. कोई बात नहीं, आपको 5 मिनट मिल गए एक्स्ट्रा, है ना. इंजॉय करो. सारा खाना जल्दी से मिल जाता है, उसका भी मजा है. थोड़ा इंतजार का मजा अलग ही होता है वैसे, तो उसको भी enjoy करो. That is what Dr. Joe Dispenza is saying, and that comes by getting into that meditative pocket several times during the day, or even if you want to do at a stretch, आप 15 minutes at a stretch भी बैठ के कर सकते हो. So that is what we have for this study. Thank you so much. Anyone wants to share anything? You can, or else we log out and we'll see you all tomorrow. Thank you so much, ma'am. So thank you so much for everyone supporting in the sessions all Ma'am, the Thank can you time. so much, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Can I share? All right. Bye. Ma'am, Thank you can so I much. share? Have a So much, super so much, brilliant day. ma'am. Have a Ma'am, super can I brilliant day. share? Thank you so Bye much, bye. Ma'am, And someone wants to share something. Someone wants to say something. I see no Oh, hand raised, so this is the reason I was logging out. हाँ I'm जी. sorry, ma'am. I'm sorry. मैंने Oh, हैंड रेज Sarika. नहीं किया. जी मैम. हाँ. मैम, आज मेरी क्लास डिले हो गई, तो इसीलिए मैं आज शेयर कर देती हूँ. मैम, सारिका चुग. I messaged you last evening. अरे बाबा, तुमको नहीं जी. जानूंगी क्या मैं? जी. Good morning, everyone. Thank you, all of you, for all your blessings. By the grace of God, I'm sharing my new victory. I reduced my weight by 8.9 kgs. It was earlier क्या था कि मेरे माइंड में ये आता ही नहीं था कि मैं कभी पतली हो सकती हूँ. ऐसा लगता था कि बाहर से आउटवर्ड रियलिटी में मैं शायद सब कुछ कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी, और फूड भी मैं हमेशा से लिमिटेड ही खाती हूँ, बट मेरा दिमाग नहीं मानने को तैयार था कि मैं पतली हो सकती हूँ. बार बार मेरे दिमाग में यही चीज आती होती थी कि 50s में तो आ ही नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता. दिमाग में बार बार कुछ भी खाते हुए, मैजिकल इंग्रेडिएंट करने के बावजूद दिमाग में ये जरूर आता था कि भाई वेट कैसे रिड्यूस होगा. वेट एक कांस्टेंट मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, ये चलता रहता था. देन मैम आपकी बात सुनी, दिमाग में हिट हुई कि जब तक अंदर से नहीं पतले होगे, बाहर से नहीं हो सकते हो. तो फिर मैंने कहा कि ओके फाइन. तो मैंने अपने दिमाग को चेंज किया, थॉट प्रोसेस चेंज की. मैंने एवरी टाइम आई स्टार्टेड राइटिंग, I am slim, slender and healthy. My body is very fit. My muscle weight is very nice. और ऐसे कर करके फिर 369 प्रैक्टिस करी, 555 प्रैक्टिस करी. उससे फायदा ये हुआ कि मेरा माइंडसेट चेंज हो गया. मैं मोटा हेल्दी, फैट, वो सब सोचने की बजाय मैं आई एम स्लिम. मैंने अपनी ड्रेसेस सोच ली, माइंड में विजुलाइज कर लिया कि मैं दुबई जाऊंगी तो मैं क्या पहनूंगी. और तब भी मैं शेयर करना चाह रही थी, बट एक्चुअली क्या था, माय वेट वाज 70.4. तो मैंने एकदम से 55 लिख दिया अपना ड्रीम लिस्ट में. और मैम, आपने एक बार कहा था कि आप वो चीज लिखो जो आपका माइंड एक्सेप्ट करे.
मेरा माइंड 55 केजी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा इतना सारा वेट एकदम से कैसे लूज हो जाएगा। तो देन आई डिसाइडेड कि मैंने 65 किया। फिर 65 जब मैंने कर लिया तो मैंने कहा मैं अभी शेयर नहीं करूंगी जब तक 5 की लाइन में नहीं आ जाएगा तब तक मैं शेयर नहीं करूंगी। देन फिर मेरा 62.4, बहुत ज्यादा टाइम के लिए ये मेरा 62.4 रहा। देन आई डिसाइडेड नहीं, ओके फाइन, तो मैंने 65 से फिर मैंने 60 केजी लिखा। अपना जो ड्रीम लिस्ट में चेंज आपने कहा था चेंज कर सकते हैं, तो मैंने 60 केजी लिखा। और उसके बाद 60 केजी नहीं हुआ, सीधा 59.15 हुआ। और कल मैंने ये देखा और मैंने सेम टाइम फोटो क्लिक करी उसकी और मैम मैंने आपको भेजी। एंड इट वाज अ ह्यूज विक्ट्री। नॉट द सेंस कि पतले होना इट्स वेरी इजी, शायद सब कर लेते होंगे, लेकिन मैंने इससे ये चीज सीखा है कि आपका थॉट प्रोसेस आपको वो काम करवाता है जो भी आपको अपनी लाइफ में करना होता है। इतना टफ था मैम मेरे लिए, मुझे ऐसे इम्पॉसिबल सी चीज लग रही थी कि अब तो स्टेगनेंट हो गया। मैम फ्रॉम पास्ट 2 years मेरा वेट हिला ही नहीं था, मतलब बढ़ जाता था, कम नहीं होता था। और मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई थी कि मेरा वेट अब ना एज वाइज बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। बट वो जो थॉट प्रोसेस था जो मैंने ब्रेक किया, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। एंड थैंक यू सो मच। इट्स ऑल योर ब्लेसिंग्स, ऑल योर टीचिंग्स। सब लोग इतनी शेयरिंग करते हैं ना, मैं सच बताऊं मैम मेरे में हिम्मत नहीं होती थी शेयर करने की। होता तो बहुत कुछ है डेली रूटीन में, हर टाइम माय लाइफ इज फुल ऑफ मैजिक एंड मिरेकल्स, बट क्या है ना, एक हिम्मत, एक एक अंदर से वो नहीं आता। जैसे अभी भी मैं थोड़ा सा फंबल कर रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है, बट बिल्कुल भी आई फंबल नहीं कर रहे हो आप, एक सेलिब्रिटी जैसे बोलते हैं ना स्टेज पे जाके, वैसे बात कर रहे हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि बॉडी का वेट हमेशा दिमाग का वेट होता है। सो जब दिमाग खाली हो जाता है, इट बिकम्स लाइट। व्हेन वी बिकम लाइट हेडेड इन द ब्रेन, द बॉडी आल्सो स्टार्ट्स बिकमिंग लाइट। सो दैट इज द ओनली वे इट वर्क्स। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड पहले तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि आप सारे टीचिंग्स को इतने अच्छे से पुट इनटू प्रैक्टिस कर रहे हो। थैंक There यू, comes the real challenge. थैंक So यू। congratulations on from 70 something to becoming 59. It is not an easy thing to do. And dream list में ये डालना, so this is incredible. जैसे आपने अपनी दुबई ट्रिप मैनिफेस्ट की थी, जब आपके पास Yes, काउंटर के पास जाके आपको मना कर दिया था कि आपका नहीं वीजा, ये वीजा फेक है या जो भी है, and how yes, you made yes, that possible by being in gratitude, by changing your energy. तो अपने आप उस पर्सन की एनर्जी चेंज हो गई and you could go. So this is actually very big experiences of self transformation. और यही self transformation reason है कि आपकी जिंदगी में इतना डिफरेंस आता जा रहा है। yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you इनकी so आवाज much. कितनी Incredible. प्यारी I है। feel really proud of you, seriously. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और हर वक्त ऐसे लगता है कि एक एनर्जी मेरे साथ चल रही है। आज आपने बटरफ्लाई का एग्जांपल बताया ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता रहता है हमेशा से। है ना? ऐसा लगता है कि मतलब नोटिस नहीं कुछ करते थे ना अभी तक हम। सनफ्लावर तो yes, सन के साथ फ्लर्ट करते हुए बहुत बार नजर आया हमको, बट हमने कभी उसको हंस के ऐसे मजाक में बोला ही नहीं कि अच्छा ऐसे कर रहे हो। नाउ वी हैव बिकम लाइक दैट, है ना? yes. जब वो सन बीच में से, पत्तियों के बीच में से झांक के देख रहा होता है, तो फिर हम कहते हैं अच्छा पूरी तरह से सामने आ जाओ। पहले तो ऐसे मैम सनफ्लावर की बात मैम करते जब मैं थे। सुबह गाड़ी चला रही होती हूँ ना अर्ली मॉर्निंग, तो सन बिल्कुल आईज के ऐसे सामने आता है, तो वो मुझे हाँ। थोड़ा सा नीचे करना पड़ता है कि, लेकिन मैं मन में बोलती हूँ सॉरी, हाँ मैं आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है, ड्राइव करना है मेरे हाँ को। हाँ, तो वही ना, कि हम जैसे पहले ऐसे नहीं करते थे। पहले तो ऐसे पहले बिल्कुल ऐसे नहीं कहते थे करते थे। क्या है, कितनी धूप है, पूरा ऐसे आ रहा है, सामने आ तो रहा है। सबसे पहले अब माइंड में हम भी सबसे मस्ती पहले करते माइंड हैं सन के साथ, फिर सबसे सन भी पहले हमारे माइंड में साथ आता था। जी मस्त। जी जी जी, सबसे पहले मैम माइंड में इनकी आता था। आवाज बड़ी स्वीट है, बड़ी प्यारी बोलती हैं ये ना, हाँ, है ना? हाँ। सुंदर थैंक आवाज। यू, लव यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक ब्यूटिफुल। यू मैम, चलो, गो इनटू द डे, एंजॉय एंड सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ योर फुल डे, थैंक यू मैम, 24/7 सेलिब्रेशन, है ना? थैंक यू लाइफ मैम, विल बिकम थैंक लाइक यू। दैट। थैंक यू सो मच। एंड सरोज जी, much, sir. आपकी आवाज Thank भी सुन के मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच।
सरोजी के पास इतनी सारी शेयरिंग्स है, अब ये बताएंगी, वो जब हंस लेंगी उसके बाद फिर वो बात करेंगी। अभी 2-3 दिन हंसेंगी वो, उनकी She's गाड़ी so बिकी है cute. ना, इसलिए वो बहुत हंसेंगी अभी 2-3 दिन, उसके बाद वो शेयर करेंगी। सरोजी, वी आर वेटिंग टू हियर योर कार वाला एक्सपीरियंस। वो बहुत इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस है, बाय द वे, यू मस्ट शेयर इट। बहुत सारे हैं, इकट्ठे हाँ, कर बहुत दूंगी। सारे हैं। रोज मुझे एक दो एक्सपीरियंस वो मैसेज करती रहती है, बट आई वांट हर टू बी इन पर्सन एंड शेयर इट, यू नो, सो दैट वी कैन ऑल्सो आस्क हर कि आपने कौन कौन सी प्रैक्टिस करी थी। और बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं इनके, विच इज like so powerful. So waiting for मैम, you, Saroji, to share soon. Okay. मैम ये आप ही की हिम्मत थी जो आपने बोला कि आप शेयर करो, नहीं तो शायद मैं आपको पर्सन पे मैसेज करके आई वाज सो हैप्पी कि मैं You वहीं पे have शेयर to share with everyone. There are so many people who are struggling with weight now. So उनके लिए भी तो आप inspiration हो. And it's not that you're 20-year-old. Biologically, you might be 20-year-old, but you have a grown-up son and you know, like, so, and at that age, जब लोगों को लगता है, मुझे सब बोलते हैं, अरे हमारी तो ना मेनोपॉजल एज है, हमारी तो मेनोपॉज के बाद ना Yes. वेट बढ़ जाता है। I weird believes these are, ऐसा कुछ होता ही नहीं है साइंटिफिकली। किसने बनाया ये सारी चीजें, दैट एज यू एज आपकी टमी निकल जाती है, एज यू, आई थिंक एज यू एज यू बिकम फिटर। So yesterday there was someone on my Instagram who personally texted me to ask that how much proteins do you have to have these kind of muscles that you have. So मैंने कहा प्रोटीन, मैं तो एक पूरे दिन भर में एक ही मील खाती हूँ अच्छे से। लंच लंच बहुत बिग मील होता है मेरा, जिसमें सब होगा, दाल चावल सैलेड रोटी सब्जी अचार पापड़, everything is there. It's a good Indian meal. Lunch is always a big Indian meal. And dinner is very scanty, something like a Mexican salad or something like that will be very small. So उस एक मील मैं उनको क्या जवाब देती। मैंने कहा my protein is less than 40 grams and she said that but the kind of muscles you have, like, because मैंने अपना वर्कआउट पोस्ट डाला हुआ है उसमें दूसरे वाले इंस्टाग्राम में, आई थिंक डॉक्टर दीप्ति पाठक वर्मा ऑफिशियल जो है उसमें। सो वहां से देख के उन्होंने कहा था दैट लाइक योर मसल्स इज सो बिग। सो अब दिस इज ऑल मैनिफेस्टेशन दैट जो आपने जो करते हो, दैट आई एम लीन। लीन का मतलब ही होता है आई हैव अ लार्जर बोन वेट एंड आई हैव अ लार्जर मसल वेट। अगर कोई बोलता है ना आई वांट टू बिकम लीन, या मुझे लीन करना है, या अभी मैं लाइक आई वांट टू बिकम लीनर, लीनर का मतलब पतला नहीं होता। लीनर का मतलब होता है मुझे मसल वेट बढ़ाना है और मुझे बोन का वेट बढ़ाना है। मेडिकली इसका मतलब वो होता है। तो जब आप बोलते हो आई एम लीन, ट्रिम, स्लेंडर, so and healthy, so that is what should be the idea. That's what it actually means, and then you become like that. जैसे मैं इतना बोलती हूँ आई एम सो हैप्पी स्टेबल एंड काम ऑलवेज, सो आई एम एक्चुअली बिकमिंग लाइक दैट। अब मुझे कोई चीज हाइपर ही नहीं करती है, और मुझे भी लगता है कि अरे ये मुझ में चेंज कैसे होता जा रहा है, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट चैटर है मेरे दिमाग में that I'm always calm, stable and happy. So I'm so poised and at ease all the time. चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, मैं अपना मस्त रहती हूँ। ठीक है, जिसके कारण very easy things are coming. I'm loving this self about myself that we have studied. So, your constant chatter and your constant self-talk, that becomes your identity. मैम Okay? वो So वाइब्स enjoy हम your तक life. आती हैं मैम। हाँ आपकी वही वाइब्स हम तक आती हैं। वी हाँ, आर तो आप काम स्टेबल कल्टीवेट हैप्पी। अपने अपने एफर्ट से वो वाइब कल्टीवेट कर रहे हो ना। आपने भी तो रोज ये बोला अपने आप को, आई एम लीन थिन स्लेंडर एंड हेल्दी। सो आप हो गए ना। So थैंक यू thank सो you so मच much. मैम। Thank you. Bye bye everybody. Have a magic